Okay. So good morning everyone. Start करें. चलो. So yesterday, I think we are yet to write some part, but more standard itself was concluded, right? Yesterday. So let us proceed with the next standard, everyone. The next standard, I'll make you write at the end, like remaining whatever is left over. The next standard which we have is known as cost audit documentation. Okay? Now, what do you understand by the term called documentation? First of all, though, you need to understand one clear difference between these two words. The word number one is known as program, and the word number two is known as what? Documentation. So, most of the time, students will get the confusion between these two words. See, program is also something in writing, and documentation means also something in writing. बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? टाइमिंग का. प्रोग्राम वी प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट. व्हेन डू वी प्रिपेयर इट? बिफोर. डॉक्यूमेंटेशन वी प्रिपेयर व्हेन द ऑडिट इज ओवर. अच्छा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज कॉल्ड माय प्रोग्राम, एंड व्हाट आई हैव डन, दैट इज कॉल्ड माय डॉक्यूमेंटेशन. डिफरेंस समझ में आया? तो से फॉर एग्जांपल, what procedures I'm going to follow, what evidences I'm going to collect, what techniques I'm going to follow, ये सब मेरा किसके अंदर आएगा? Program. But what actually I have followed, what actually I have collected, what actually I have drawn, what actually I have adopted, what conclusions I have drawn, my each and everything about the audit from the starting to the end, everything in a written form, that is called what? Documentation. This is what is called ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल. व्हाट डू वी कॉल इट एज? तो ये फाइल आपके ऑफिस में फॉर द नेक्स्ट 10 years अवेलेबल होनी चाहिए. फॉर हाउ मेनी years? 10 years. क्यों अवेलेबल होनी चाहिए? रीजन यू ऑलरेडी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हाट? पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, पीयर रिव्यू इज कंडक्टेड बाय योर इंस्टीट्यूट, quality review is conducted by the central government. So if it is quality review, definitely you need to worry. Why? Because central government will not be partial and biased. Because when the institute conducts a peer review, there are little bit chances that you may have a scope of getting little bit lenient kind of punishment, which I told you, like membership only. But in case of quality review, you can be thrown to the jail as well in case they find out that you are not doing the proper services, quality services to your clients. Am I correct? So that is a major difference you should know before starting this standard. So we are not at all talking about something which we were planning to do. We are talking about something which we have already done. That is what do you mean called documentation. क्योंकि documentation का grammatical meaning is something in writing. So both the things are in writing, but that is before starting the audit and that is after completion of the audit. So what is the name of our standard, everyone? Cost audit documentation. कि once our cost audit is over, what are the documentations you have to prepare, for how long, what should be your assembling time, what is the quality control measures are expected from you, everything we are going to understand in this standard. Now see, the following is the cost auditing and assurance standard on cost audit documentation 102. In this standard, the standard portions have been set up in what? Bold italics. तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि आपको स्टैंडर्ड कितना पढ़ के जाना है, something which is written in bold. That is the reason yesterday also I told you in the lower part, the lower non-bold portion is nothing but the extension of your bold part, which we are anyways doing the oral discussion in the class, right? This standard should be read in the context of the background material which has been set in a which type? Normal type. Now, introduction. The purpose of this standard is to provide the guidance to the members in preparation of audit documentation in the context of audit of cost statement, records and other related documents. Now, nature, purpose and the cost of audit documentation. पहले तो मेरे को ये बताओ, why leave? कि why do you need? I'm not asking you about the peer review reason. My question is, what is the benefit of you maintaining the documentation? Leave your peer review and quality review. It serves as a guide for your which year audit? Next year audit. And most importantly, it acts as a self-defensing tool. समझ रहे हो? मान लो अगले 2 साल के बाद क्लाइंट आपके ऑफिस में आता है सडनली, और क्लाइंट आपको बोलता है कि रोहित, यू आर ग्रॉस नेग्लिजेंट, यू आर दिस एंड दैट, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया. Will I be able to show him the documentation or not? So when I will show him the documentation, what will happen? He will not be able to put the responsibility of his negligence on my shoulder. Am I correct? I'll be able to defend myself. So that is a major 2 purposes of this audit documentation. Point number 1, serves as a guide for which audits? Future audits.
and most importantly acts as a which tool? Self-defensing tool. Okay? Now, cost audit documentation that meets the requirement of this cost accounting standard and the specific documentation requirements of the other relevant cost auditing standard provides evidence of the cost auditor's basis for the conclusions about the achievement of overall objectives of the cost auditor. This is a very heavy line which is given. I will tell you in the simple way. What they are saying, how do you, पहले मेरे को ये बताओ, how do you express an opinion? Opinion is always expressed on the basis of what? Conclusions. And conclusions you can only draw when you have what in your pocket? Evidence. So why do we create a documentation? So that we can protect our evidence. That in future if somebody will ask me, Rohit, on what basis you are saying that the Vizag steel plant is true and fair? So I'll be able to show my what? Evidences. तो याद रखना आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या होता है? आपका प्रोग्राम होता है, आपका प्लानिंग होता है, आपका स्ट्रेटजी होता है, आपका एविडेंसेस होता है, आपके वेरिफिकेशन स्टेप्स होते हैं, योर अपॉइंटमेंट लेटर, every piece of paper which you have collected throughout your audit is going to the part of your which one? Audit documentation file. So what is the purpose number one? It includes my what? Evidences on the basis of which the cost auditor has expressed the opinion. Purpose number one. Purpose number two, evidence that the cost audit was planned and performed in accordance with cost auditing standard number 101. मतलब ये भी शो करता है कि अगर इसके अंदर मेरी प्लानिंग है और इसके अंदर मेरा प्रोग्राम भी है, स्ट्रेटेजी भी है, व्हाट डज दैट शो? कि भैया मैंने CAAS 101 भी फॉलो किया है. व्हाट इज CAAS 101? Planning and performing the which audit? Cost audit. So that shows that कि I was not jumping to the client's place just like that. मैंने कोई spontaneous audit नहीं किया. I did my audit in a planned way and in a which way? Normal performance way. Are you getting it? So that, can I say that that shows your demonstration? It demonstrates your performance of an auditor? Yes. So what are the two purposes? Again, first one, evidence of the cost auditor's basis for what? Conclusions. And second one, evidence that the cost audit was planned and performed in accordance with cost accounting standards and applicable legal and regulatory requirement. अच्छा, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ. अपने ना एक कॉस्ट ऑडिट में एक कॉन्सेप्ट होता है MRL. MRL का मतलब होता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू टोल्ड योर क्लाइंट कि आई वुड लाइक टू विजिट योर गोडाउन. अब गोडाउन जो है वेयर द इन्वेंट्री इज लाइंग, गोडाउन इज लाइंग इन द नक्सल एरिया. विच एरिया? अब नाउ प्लीज टेल मी, इज इट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन? Would you like to visit? To putting your life in danger just to verify someone's inventory? I think no mad fellow will go over there. तो उस सिचुएशन में what you will ask your client, आप अपने क्लाइंट को बोलोगे भैया मेरे को MRL दे दो. Please give me what? MRL. What is MRL? Management Representation Letter. The another name of this document is known as what? WRL. Now when you collected the MRL and WRL, that shows an evidence that कि management is ready to give a declaration that कि you are unable to go to the godown. That's why we are declaring that how much inventory is lying in our godown. हम लोग आपको declaration दे रहे हैं. Let's say for example few years later आपकी organization के ऊपर peer review हो गया. अब so many practicing CMAs are coming to your firm and they are checking कि रोहित you are not able to go to this inventory checking just because the godown was lying in a which area? Naxal area. So you should have done, you could have taken what? WRL. And suppose I did not take. That shows what? Did I comply with the laws and regulations or I violated them? That is what the point number two. Read the point number two again. Evidence that the cost audit was planned and performed in accordance with cost accounting standards and applicable legal and regulatory law. जब आपको लॉ में लिखा गया है कि when there is a life threatening situation, if nothing is available, at least get WRL, but you have not taken it, it means you are completely negligent in doing your audit. This is the reason every CMA in practice must maintain the documentation because it demonstrates your performance. Second one, cost audit documentation serves as a number of additional purposes. What is the purpose number one? Assisting the team to plan and perform the which audit? Cost audit. देखो, you know that your articleship is for 2 years. Am I correct? After 2 years, you will leave. Somebody else will come. For that new articles, is it going to be the first year audit? So how the first year articles you expect that will do the planning and procedure? How he will plan and perform his audit? By opening your last year ka documentation. Are you getting the point?
तो लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंटेशन विल शो हिम दिस इज व्हाट वी प्लान, दिस इज व्हाट वी चेक, अकॉर्डिंगली ही विल प्रिपेयर हिज करंट ईयर का व्हाट ऑडिट प्लान एंड program. Did you get the point? So what is the purpose number one? Assisting whom? Audit team to plan and perform the which audit? Cost audit. Second one, assisting the members of the audit team responsible for the supervision to direct and supervise the cost audit work and to discharge their review what? Responsible. अगर आपको कल याद हो मैंने आपको एक वर्ड बोला था DRS. What is DRS? Direction, review, supervision. It also helps you in doing DRS. That is a purpose number 2. Purpose number 3, enabling the audit team to be accountable for its work. Let's say for example, ये मेरी आर्टिकल असिस्टेंट है, मैंने इसको बोला कि अमा these are the 20 things you have to do and report me by Monday. तो उन्होंने बोली okay sir, I'll report you by Monday. On Monday when she came up with the 15 things only. How many? 15 things only. And when I asked her where are the remaining 5 things, she told me sir, you told me only 15 things. Now tell me one thing, when I gave her the oral instructions, was I able to fix her responsibility? No. But if I'll give her the written instructions, what will happen? One copy is there with her, one copy is there with me. If on Monday she will come up with the 15 items only verified, can I make her responsible for the non-verification of the 5 areas or not? So which one is better? Giving instructions in oral or giving instructions in writing? That is also a part of your documentation. Read the last C point again. Enabling the audit team to be accountable, मतलब responsible for its work. Next one, retaining the records of matters of continuing significance for the which audits? Future cost audit. Just now I told you what is the best advantage of this documentation. Serves as a guide for which audits? Future audits. Next one, enabling the conduct of quality control reviews. This is what I was telling you, peer reviews and quality review. Does it show as an evidence of your performance or not? So say for example on you QRB is happening in accordance with guidance manual for audit issued by quality review board. So remember there are two reviews which takes place on you, PR and QR. PR is under the peer review board and QR is under the quality review board. ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये आपका इंस्टीट्यूट करता है और दोनों का पर्पस सेम है, आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट को चेक करना. क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, you dare you give the poor quality in the market, the problem is not with you, problem is people will start degrading the institute. That institute does not want. Please tell me, I'm a practicing CA right now, whom I'm representing? Not myself, not my firm, I'm representing my professional body. तो अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है या नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड द नेग्लिजेंस ऑफ द पर्सन, दैट इज कॉल्ड द नेग्लिजेंस ऑफ अ व्हाट? इंस्टीट्यूट. That's the reason institute does not want to keep the low profile CAs and CMAs in their organization who can't maintain the fundamental principles of the institute. So they keep on conducting the which review? Peer review. अब मैं तुम्हें एक peer review का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, पहले सुनो. मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि peer review होता कैसे है. मैं तुम्हें एक्चुअली दिखाता हूँ. मेरी फॉर्म के ऊपर भी peer review हो चुका है ऑलरेडी. 2016 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ था. होता कुछ नहीं है सर peer review में. लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ नाम की बातें हैं. peer review में practicing CA, CS, CMA comes and they just sit in your office and they just simply would like to see कि how you are performing your audit. आपको क्या बोलेंगे? You will continue your work. 7-8 days they will come to your office and that's how they will see your work. If I am able to show you, एक second. Advantages. It is in the 3rd chapter. एक्चुअली मेरे हैंड रिटन नोट्स इतने ज्यादा हैं कि आई माई सेल्फ समटाइम्स गेट कंफ्यूज कि वेयर डिड आई कीप इट. ये 550 है, इंक्वायरी, हाँ इसके ऊपर है. देयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ पीयर रिव्यू. ये होता है पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट. दिस इज हाउ द सर्टिफिकेट कम्स. ये देखो वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है. दिस इज PRB. व्हाट इज PRB? पीयर रिव्यू बोर्ड. ये अपने इंस्टीट्यूट के अंडर का बोर्ड होता है और दिस इज द नेम ऑफ द फॉर्म विच गॉट रिव्यूड एंड दिस इज द ईयर फॉर विच दे गॉट रिव्यूड, 6 and 7 and 7 and 8. And this certificate you have to display in your office as well. That demonstrates to the outside world कि you are a good auditor. और ये हमारे स्टैंडर्ड में
एप्लीकेबल है। देखो ऐसे 230 टॉक्स अबाउट व्हाट, और अपना सीएमए का नंबर क्या है 102, और यही सीएमए इसका नंबर है 230, ठीक है ना। हियर यू कैन सी दैट ये सारे टॉपिक्स जो भी इसके अंदर लिखे हुए हैं ना, सेम टॉपिक्स यू विल फाइंड इट ओवर देयर। जैसे देखो, एज अ सीए यू नीड टू कीप इट फॉर हाउ मेनी इयर्स, 7 years, बट एज अ सीएमए यू नीड टू कीप इट फॉर 10 year। ये सारी चीजें अपने को ये स्टैंडर्ड में पढ़नी है इफ इट इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड द फोर्थ पॉइंट एज वेल। तो व्हाट इज द फिफ्थ एडवांटेज? It also helps you in defending yourself against the two types of reviews. What are the two reviews? Peer review and quality review. Next one, it enables the conduct of external inspections in accordance with applicable legal. Let's say for example, वाइजेक स्टील प्लांट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो गई, ठीक है। What the income tax department was looking for, that information they are not able to see it where? In the वाइजेक स्टील प्लांट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट दे नो दैट कि that information is lying in your office. So my question to you is whether the income tax department can summon you to show your documentation if there is a question of law. Yes or no? Yes. उस केस में आपकी confidentiality बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि I told you what are the two cases under which your confidentiality breaks, either with the prior permission of client or if there is a question of law. So in that case you cannot say that no I am the owner of these paper, you turn around po. So they will go to your institute and they will make a complaint against you under DD. You remember na DD? Directorate of Discipline, then BOD, then DC. All that disciplinary mechanism will start against you. Because you are guilty of which conduct? Professional matter. You are becoming a barrier in external inspections. So yes, documentation does help in external inspections. तो मोटा मोटा अगर अपन 6 इसके advantages देखें, तो what is the advantage number 1? Point number 1, helps in planning and performing the audit. Point number 2, it helps in DRS. What is DRS? Direction, review, supervision. Next point, it makes my audit team responsible and accountable for their work. Fourth point, it helps as a guide for the which audits, future cost audits. Fifth point, it helps in peer reviews and quality reviews. And sixth point, it also helps in which inspections? External inspection. तो ये हो गए इसके पर्पस, एडवांटेजेस, फंक्शंस एंड रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, the objective of this standard is to guide the members to prepare the documentation that provides SAAE. What is SAAE? Sufficient and appropriate records for the basis of what? Cost auditor's report. अगर आपके पास evidence नहीं है, you can't issue a report. And where you will find your evidences? You will find your evidences always in a which file? Documentation file. And evidence that the audit was planned and performed in accordance with the cost accounting principles, legal and regulatory requirements. Scope. This standard deals with cost auditor's responsibility to prepare audit documentation for the audit of cost statements and other related. The specific documentation requirement of other cost standards do not limit the application of this cost auditing standard. Law or regulation may establish additional documents what required. What they are saying that कि you definitely have to follow 102, but let's say for example you are doing the cost audit, right? Say for example you are doing the cost audit of Dr. Reddy's laboratory. अब Dr. Reddy's laboratory का regulated sector है, unregulated sector है? Think logically, regulated ना, pharma and drugs. अब उसका जो regulator है, Indian Medical Association, they sent a letter to you. What the letter? कि along with your documentation we need some additional documentations. What did they send? Along with your documentation we need some. In that case, can you say no to them saying that ki, no, I will only follow my 102, I will not prepare the additional documentations for you? Are you allowed to say no or not allowed? So what they are saying in this paragraph, the scope is you have to follow this cost auditing standard, but along with that, if some, read the last point, cost auditing standards do not limit the application of this cost auditing standards, laws or regulation may establish additional documentation requirement. तो उस टाइम पे आप उनको मना नहीं कर सकते कि नहीं, I will only follow 102 which I require, I will not take care of your request. So you are not allowed to say no when there is a question of law. So additional responsibility also you have to shoulder. Now again, definition of auditing, you know, please tell me. It is an independent and systematic examination of financial and cost information of the entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size, nature and structure, with the sole objective of expressing an opinion.
सिंपल है, ये तो अपने रात को 3 बजे भी शेकअप कर लो तो यू विल बी एबल टू टेल दिस डेफिनेशन नाउ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? अब ध्यान से सुनना, रिपीट आफ्टर मी. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू ऑडिट वर्किंग फाइल, refers to audit working, which includes your what? Audit procedures, audit techniques, audit evidences, and audit conclusions. Repeat the 4 points. Audit PET C. ये याद रख लो हमेशा. It includes your PET C. Procedures, evidences, techniques, and conclusions. उस फाइल को अपन क्या बोलते हैं? Audit documentation file. Read this. What is the definition? Audit documentation means the records in the physical or which form, including the which file, working papers file prepared by and for or obtained and retained by which auditor, cost auditor, in connection with the performance of his audit. तो इसके अंदर आपका क्या क्या होगा? PETC. What is PETC? Procedures, evidences, techniques, conclusion. Because when do you prepare it? After completion of the audit. So what you have done, what you have achieved, that is what you are going to put it in a written form. That is called documentation. Audit file. It means one or more folder or other storage media in a physical or which form? अच्छा मेरे को ये बताओ, whether the scanned copies will do the purpose for you or it has to be the physical copies. अब मान लो जैसे अब एक बड़े क्लाइंट को ऑडिट करते हो तो ऑब्वियसली उसके लैक्स एंड लैक्स ऑफ परचेज इनवॉइस होंगे. So you can't tell him to take the printout of everything and give it to you. At that point of time, you can collect your documentation. It can be either in the which form, physical form or in the electronic form, containing the records that comprise the audit documentation of a specific assignment or audit. And who is the audit partner? Please tell me. How many people are there in your team? 6 people. Name them please. Engagement partner, audit manager. सेम डेफिनेशंस है पिछले स्टैंडर्ड के. हु इज अ ऑडिट पार्टनर मींस अ पार्टनर ऑफ द फर्म हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होल्डिंग अ फुल टाइम COP and also held responsible for the major task to be completed in the audit. Is he a blame giver or blame taker? Blame taker. तो सबसे ज्यादा प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम में ऑडिट पार्टनर की होती है. एंड इन अवर ऑडिट वी कॉल दिस पर्सन एज एंगेजमेंट पार्टनर. ठीक है. व्हाट इज ऑडिट टीम? Comprises of all those members, includes your engagement partner, audit manager, paid assistant, junior article assistants, senior article assistants, and employees. And this is what I was talking about. What is this? Audit working papers are the documents which records all your what? Audit evidence obtained. Such documents are also used to support the audit work done in order to provide assurance that the audit was performed in accordance with the रेलेवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. मतलब ब्लेम गेम को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है. कोई मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करना कि रोहित यू डिडंट डू द ऑडिट प्रॉपर्ली, तो आई कैन स्लैप दैट पर्सन नॉट फिजिकली बट बाय शोइंग माय व्हाट डॉक्यूमेंटेशन. एक्ट्स एज अ विच टूल? सेल्फ डिफेंसिंग टूल. नेक्स्ट वन, हु इज अ कॉस्ट ऑडिटर? प्लीज टेल मी. Cost auditor is a auditor who is a qualified cost accountant under the Institute of Cost and Work Accountants 1959. Cost accountant is a cost accountant as defined in the clause B, subsection 1, 2. तो ये हो गया 2, 1, B of which act? CWA Act 1959. Who holds a valid certificate of practice under subsection 6, 1 and 6, 1 and who is deemed to be in practice under section 2 subsection 2 of that act and includes the word firm of accountants. When we talk about the firm of accountants, what are the 3 possibilities you can practice in India? Sole proprietor, partnership firm, and this is what is written in the next definition. So half of the definitions are being borrowed from the previous standard only. Now the requirements. Cost auditor as a part of audit documentation shall record audit procedures performed. फिर क्या बोला था? पेट सी में क्या क्या आया था अपना? प्रोसीजर वर्ड आ गया. रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजंस रीड. एक वर्ड रह गया टी, वो आप इंक्लूड कर लेना. टेक्निक्स अडॉप्टेड. तो प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंसेस कलेक्टेड, टेक्निक्स अडॉप्टेड, कंक्लूजंस रीच्ड. Cost auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable the another competent person having no previous connection with said audit. ये आपका है जून 2019 में ये क्वेश्चन आया था. ध्यान से सुनना. How you will
enable the other person to understand that कि yes your cost audit documentation is enough. जैसे say for example, जब मैं कॉस्ट ऑडिट करता हूं तो आई डू बिलीव इन कलेक्टिंग मोर एविडेंस, बट मेरा जो सीनियर है व्हेन ही डज द कॉस्ट ऑडिट ही बिलीव्स इन कलेक्टिंग द वेरी लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन. तो समटाइम्स मेरी ऑडिट वर्किंग फाइल इतनी मोटी हो जाती है और उसकी ऑडिट वर्किंग फाइल इतनी पतली होती है. तो मेरा क्वेश्चन ये है, हुज ऑडिट वर्किंग फाइल इज सफिशिएंट? ये आप कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि ऑडिट इज प्योरली अ गेम ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. इट्स अ विच जजमेंट? हो सकता है मेरा सैंपल साइज 10% आउट ऑफ 100 हो, तुम्हारा सैंपल साइज 5% आउट ऑफ 100 हो. आई कैनॉट से दैट यू आर रॉन्ग एंड यू कैनॉट से दैट आई एम रॉन्ग, क्योंकि एवरीवन्स प्रोफेशनल जजमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी फाइल इतनी मोटी है एंड योर फाइल इज दिस मच स्लिम, हाउ यू विल मेक श्योर द अनदर पर्सन दैट कि योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज सफिशिएंट और नॉट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो मान लो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतनी मोटी है, मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतनी मोटी है. कोई कैसे डिसाइड करेगा कि वेदर यू डिड द ऑडिट प्रॉपर्ली और आई डिड द ऑडिट प्रॉपर्ली? इसका आंसर है गेटिंग इट रिव्यूड बाय थर्ड पर्सन. गेटिंग इट रिव्यूड बाय विच पर्सन? आपको क्या करना है, आपको आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल किसी और कॉस्ट ऑडिटर के पास लेके जाना है. यू हैव टू ब्रिंग इट टू द अनदर कॉस्ट ऑडिटर हु हैज नो कनेक्शन विद दैट ऑडिट and show him your documentation. If after reading your documentation he is simply saying that ki Rohit what you have done is right, it means your audit documentation is sufficient. जैसे simple सी बात है सर, I am teaching you this subject. I cannot say that कि whether you are understanding my concepts or not. It is your feedback which will make me understand कि are you comfortable with the language or not. So whenever the person wants to know his performance, he always should get the third party opinion. Which opinion? So please tell me what is the answer to this question. How you will ensure that your documentation is sufficient and appropriate? By getting it reviewed by you or by getting it reviewed by a third party? Who should be that third party? Another practicing CMA who has no connection with this audit. अगर वो आपके प्रोसीजर्स पढ़ेगा, आपके एविडेंसेस कलेक्ट देखेगा, and he will see your techniques and he will see your conclusion. If he thinks that ki Rohit, if I would have been at your place, I would have reached to the same conclusion, then in that case you can say that yes, my documentation is 100% correct and genuine. Did you get the point? Read this question again. Cost auditor as a part of audit documentation shall record and procedures performed, relevant evidence and conclusions reached. Cost auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable whom? ये कौन हुआ? Who is this another competent person? Another practicing CMA having no previous connection with the said audit, including a person undertaking the peer review to understand. अगर आपका peer review का बंदा ये समझ जाए कि सर अगर मैं आपकी जगह होता मैं भी यही करता, तो it means you are right or you are wrong. You are right. But if he is unable to understand your audit, कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कचरा क्या है, what is this garbage, तो it means you should understand कि you have not done the audit properly. तो ये होता है best test of audit documentation, of its sufficiency और of its appropriate. मतलब आपकी quality और quantity somebody else will decide. इसीलिए आपके ऊपर peer review होता है, ताकि CA CMA इंस्टीट्यूट को ये पता चले कि whether you are competent CA CMA or incompetent, because at the end of the day customer is king. Who is our customer? Client. That is rule number 1. And what is rule number 2? Read the rule number 1 again. Customer is king. ये हमेशा याद रखो. और याद रखना, peer review and quality review not only by someone's complaint, sometimes your auditee complaints to the institute कि I am not satisfied with the services provided by this cost auditor. 4 तरीके होते हैं peer review, quality review के. या you yourself voluntarily want to get it reviewed, जैसे मैंने 2016 में खुद अप्लाई किया था कि मेरे को peer review चाहिए. Reason being very simple, peer review certificate boost your business by 50%, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपको ऑफिस में डिस्प्ले करना होता है. एंड दोज हु नो अबाउट दैट सर्टिफिकेट विल वेरी मच गेट इंप्रेस्ड बाय यू, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट बोल रहा है कि यू आर द बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट. रीजन नंबर 1,
कि why you go for voluntary. Reason number 2, if the auditee does not like. Reason number 3, somebody made a complaint. Reason number 4, referred by central government. These are the 4 ways by which what can be conducted on you? Peer review. So if the peer reviewer can understand or another competent person can understand कि you have done the audit properly or not, that is the best test of your sufficiency and appropriateness of your audit documentation. तो कभी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, अगर मेरे ख्याल से अगर ये पूरे स्टैंडर्ड में अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज दिस क्वेश्चन कि हाउ समवन डिटरमाइंस वेदर हिज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज सफिशिएंट एंड appropriate. उसका आंसर देख लो नीचे. What does that show? Conformance of audit procedures performed with the legal and regulatory requirements. Conformance to which standards? Cost auditing standard. Results of the audit procedures performed. Audit evidences obtained. Significant matters arising during the audit. The conclusion reached thereon and the significant professional judgments made in reaching those conclusions. चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. सपोज अपन एक सीमेंट पोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं जो ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मैन्युफैक्चर करती है. आप जूनियर सीएमए हो, मैं सीनियर सीएमए हूं, सेम फॉर्म में हम लोग पार्टनर है. मेरे को ये बताओ अम्मा, 2 लाख पोल्स आर देयर इन द गोडाउन. हाउ मेनी पोल्स यू वुड लाइक टू वेरीफाई? देयर आर 2 लाख पोल्स. दे हैव मैन्युफैक्चर्ड 2 lakhs इन अ ईयर. बैलेंस शीट डेट पे 2 लाख पोल्स है इन्वेंट्री. हाउ मेनी पोल्स? अब मेरे को ये बताओ पहले तो, डू यू नो दैट हाउ डू वी वेरीफाई द पोल्स? अब ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, इनके अंदर एक वायर होती है, आयरन वायर. उसको 2 मशीन्स ऐसा टेंशन क्रिएट करती है एंड वी हैव टू सी दैट एट व्हाट टेंशन द सीमेंट इज गेटिंग बर्स्टेड. इफ द पोल विल ब्रेक एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टेंशन बाय द 2 machineries, that is called the testing of what? Cement poles स्ट्रॉन्गनेस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरा क्वेश्चन ये है, 2 लाख सीमेंट पोल्स है, आपका सैंपल साइज क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली आप 2 लाख पोल्स को वेरीफाई नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली यू विल डू ऑडिट सैंपलिंग. व्हाट विल बी योर सैंपल साइज? 2 lakhs में से 100. ओके सर, आपका लास्ट में 15. योर्स? You do it ना, no problem. They will give you the safety gears to do it. क्योंकि you can't be reliable. Why did they hire you otherwise? So you are doing, instead of doing inspection, you will do observation. Okay, great. You 100 to 200. मतलब you would like to break 100 to 200 poles. 2 lakhs are there. You Amma? 50, 15, 100, 100 to 200 observation. You Amma last? 100 to आपका 300 आपका. अब मेरे को ये क्वेश्चन बताओ, एवरीवन इज गिविंग द सेम आंसर, क्यों गया है डिफरेंट आंसर? प्रोफेशनल जजमेंट. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि ऑडिट सैंपलिंग इज समथिंग एंड ऑडिट इज सच काइंड ऑफ प्रोफेशन जिसमें 2% कैन नॉट बी द सेम. हमेशा याद रखना. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग इन सेइंग ऑब्जर्वेशन, यू आर राइट. क्योंकि इफ यू थिंक दैट यू कांट डू द फिजिकल इंस्पेक्शन बट एविडेंस तो चाहिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट इंस्पेक्टेड यू विल गेट इट बाय ऑब्जर्वेशन. बट आप बोल रहे हो 100 to 200, इन्होंने बोला 50, उन्होंने बोला 300, आपने बोला 100 to 200. तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट सैंपल साइज. चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल 200 में हमने मामला सेट कर दिया, 2 lakhs का 200. आर यू गेटिंग? व्हाट इज द सैंपल साइज? नहीं, इन परसेंटेज इज इट 0.1%? It is 0.1%. But let's say for example, if it is 2 crore cement poles, उसका 0.1% लगाना, it will be 20,000. It will be how much? 20,000. Can you verify now 20,000 poles? अब तुम्हारा सैंपल साइज और डिक्रीज हो जाएगा. तो मेरा ऑब्जर्वेशन देखो अभी, with the increase in size of population, we definitely have to increase the sample size, but not necessarily to be in proportionate measure. पॉपुलेशन 1000 टाइम्स इंक्रीज करी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सैंपल साइज भी 1000 टाइम्स इंक्रीज करोगे. यू विल इंक्रीज इट बट नॉट नेसेसरली टू बी इन प्रोपोर्शनेट विद द इंक्रीज इन व्हाट? पॉपुलेशन. ये टेक्निक्स होती हैं ऑडिट करने की, और ये ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट ईयर में समझ में आ जाएगा. नहीं, ओवर जैसे मेरे को 11 years हो गया अभी प्रैक्टिस करते हो, तो दिस इज समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई 11 years ऑफ एक्सपीरियंस. कि ऑडिटिंग प्रोफेशन ऐसा है
जिसमें 90% ऑफ योर ऑडिट इज नॉट बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, इट इज बेस्ड अपॉन योर जजमेंट। ये सेम चीज अपने को यहां पे लिखनी है। अब who will tell whether my work is good or not? He will do the phi test on me. What is the test number 1? Read. Conformance of audit procedure performed with legal and regular. Peer reviewer आके क्या चेक करेगा कि अगर वो मेरी जगह होता तो वो क्या करता? Whether he should have followed the same sample size or not. Test number 1. Read the test number 2. Conformance of cost auditing standard. Whether how I planned and performed my audit, whether he should have planned and performed his audit as per 101 or not. What is the next test? Results of audit procedures performed. If the अच्छा मेरे को ये बताओ, how many of you know this word tolerable range? Yes, tolerable error range का मतलब क्या होता है? How much you can tolerate the errors to have happened in the client's place. जैसे मेरी tolerable error range जो मेरी पर्सनल मैं यूज करता हूं वो है 2%। कितना? मतलब अगर मैं 100 आइटम्स को वेरीफाई कर रहा हूं, उसमें अगर मेरे को 2 एरर्स दिखी, मैनेजेबल है, आई विल स्टिल से दैट एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। द मोमेंट इट विल टच और ब्रीच 2%, आई विल इंक्रीज माई विथ साइज, सैंपल साइज। तो हर एक बंदे की अपनी टॉलरेबल एरर रेंज होती है, हो सकती है आपकी 10 हो, तो इट मींस इफ आउट ऑफ 100 95 पॉजिटिव आर कमिंग एंड 5 नेगेटिव आर कमिंग, इज इट विद इन योर टॉलरेबल एरर रेंज? बट इट इज बियॉन्ड माई टॉलरेबल एरर रेंज। हो सकता है यू विल नॉट डू एनीथिंग टू योर सैंपल साइज, but I may increase my what? Sample size. So you cannot say that I am wrong in this case. So there is no particular criteria set for judging someone's documentation. It is just a simple conclusion. आप मेरी फाइल पढ़ो. If by reading my file you are able to understand that what I have done is proper and what you could have done is also the same way, it means I got my answer. That means everything is sufficient and appropriate. जैसे सर आपको क्लास के बाद फीडबैक लिया जाता है फैकल्टी का। अब मान लो मेरे को अगर 90% फीडबैक आता है कि वी आर ओके विद सर एंड 10% बोलता है कि सर वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द सर, तो आई विल नॉट बॉदर अबाउट द 10%। रीजन, आई एम नॉट गॉड, आई कांट मेक एवरीवन सेटिस्फाइड, एम आई करेक्ट और नॉट? बट एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी, अगर 80 to 70% आपका फीडबैक आता है, दैट मींस यू आर कूल। बट इफ यू आर majority goes in the negative way, 50-60% बोल रहे कि we are not okay and some are saying we are okay, it means it's time to replace the faculty. Simple. That is how we get it, like we get the feedback from the peer reviewer and the another CMA in practice. And what is the fourth test they do? Audit evidence obtained. अब मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, ध्यान से आंसर देना, प्रोफेशनल जजमेंट का क्वेश्चन है। आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे थे and you found FD over there. What is FD? Fixed deposits. वो है 650 crores with SBI. एक कंपनी ने FD किया 650 crores with SBI. Obviously, you would like to obtain evidence for the same. What is the best evidence? FDR. What is FDR? Fixed deposit receipt. You ask the client. Client क्या बोल रहा है कि सर ये जो FDR है ये है CEO के लॉकर में पड़े हुए हैं। तो मैंने बोला CEO को बुलाओ। सर CEO US में है। मैंने कहा लॉकर खोलो। सर लॉकर बायोमेट्रिक है। वो थंब इंप्रेशन ऑफ क्या? सीईओ के क्यों खोलो? मैंने कहा ये तो गड़बड़ है। फिर मैंने कहा सीईओ को बुलाओ। कहते सर वो नेक्स्ट 2 years तक नहीं आएंगे। अब बताओ, अब आपने बोला कि भैया मेरे को एफडी चाहिए, उन्होंने बोल रहे से एफडीआर अवेलेबल नहीं है। अब मैनेजमेंट ने आपको क्या सोल्यूशन दिया? ध्यान से आंसर देखना। मैनेजमेंट इज सेइंग दैट रोहित सर एक काम करो ना, आप डब्ल्यूआरएल ले लो। व्हाट इज डब्ल्यूआरएल? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। और हम उसके ऊपर लिख देते हैं टू whomsoever it may concern we have the FDs with SBI worth 650 crores standing as on 31/3/2023। और आप नीचे स्टैम्प साइन करके सब दे। मेरे को 10 लेटर हेड्स दे दिए उन्होंने, 10 एविडेंसेस। आई टुक द एविडेंसेस, वेंट टू माय ऑफिस, मैंने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। कमेंट कमेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज ऑडिटर राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। आप बैंक में जाके डुप्लीकेट एफडीआर ले सकते थे। अब यहां पे प्रॉब्लम पता क्या हुई? यहां पे जिन लोगों ने राइट आंसर बोला ना, इसका मतलब दे डोंट नो द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब आपके पास चॉइस थी, एक इंटरनल एविडेंस और एक एक्सटर्नल। सोर्स मैटर करता है। अब मेरे को ये बताओ, ये डब्ल्यूआरएल क्या है? इंटरनल। किसने दिया? मैनेजमेंट ने। कैन बी पार्शियल, कैन बी नॉन रिलायबल, but what about the duplicate FDR issued by bank? That will be source will be internal or external? Would be more reliable or not? तो आपको क्या करना चाहिए था?
यू शुड हैव आस्क्ड फॉर अ डुप्लीकेट एफडीआर। चलो यार बैंक चलते, एक एमडी को उठाओ बिठाओ बाइक पे, चलो बैंक में जाकर डुप्लीकेट एफडीआर, 50 रुपीज का खर्चा है, बट यू गॉट सेटल्ड विद व्हाट, डब्ल्यूआर। दैट शोज योर प्रोफेशनल जजमेंट। यहां पे आके पीयर रिव्यूअर आपको नेगेटिव सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि उसकी जजमेंट क्या बोलती है, आई शुड हैव गॉन फॉर डुप्लीकेट एफडीआर, बट आपने क्या किया, डब्ल्यूआर। आपने मतलब लीस्ट रिलायबल एविडेंस को मोस्ट रिलायबल शो करके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ऐसे पता चलता है कि आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। दिस इज हाउ द पीयर रिव्यू इज गेटिंग कंडक्टेड ऑन यू। इससे पता चलता है कि हाउ गुड यू वर विद द स्टैंडर्ड्स। सर आपके तो यहां पे 4 है और 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारे यहां पे 68 प्लस 35, इतने स्टैंडर्ड्स। हर मोमेंट के ऊपर हर रोज कॉल आता है, 10-10 कॉल पीयर रिव्यू के, सर ये आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने, लेकिन जो इग्नोरेबल आइटम्स है दे विल नॉट कंसिडर, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और अमाउंट देखो कितना था, यू कांट टेक रिस्क in depending upon WRL. This is what I was trying to tell you in the last 15 minutes. This is called the sufficiency and appropriateness of your documentation file. इससे पता चलता है कि आप एक गुड सीएमए हो और अ बैड वन। मींस डू यू नो योर स्टैंडर्ड्स और यू डोंट नो योर स्टैंडर्ड्स। समझ में आया सर? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। द कॉस्ट ऑडिटर शैल रिकॉर्ड द डिस्कशंस ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द क्लाइंट पर्सनल एंड आउटसाइडर। ये एक थंब रूल है, याद रखना। Whatever you communicate with your client, suppose sir at the time of communication oral communication is going on, whatever you have discussed in the boardroom or with the client, tell them to put it in writing and do the signature on that and take 2 copies of the same. ये rule है, याद रखना। Never communicate anything with your client in a which way, oral, always communicate in writing. But sir on the spot तो oral ही होगा, let it be oral, later on convert your oral conversation into written and take the signature of whom, client, क्योंकि you never know when the client may put the total blame on you, क्योंकि oral communication का कोई evidence नहीं होता, but written communication with the signature of the client shows me and acts as a self defensing tool. Next point, cost auditor shall record any departure from the standard requirement in cost auditing standard. अगर आपको याद हो 812 812 समझ में आ रहा मैं कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं? 812 पढ़ो 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 पढ़ो, लिखा हुआ हमने 812 पढ़ो, क्या था? 812 और 912 दोनों पढ़ना। फेल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और 9 वाला पढ़ो, फेल टू ड्रॉ द मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। कैन यू रीड द सेम पॉइंट? Cost auditor shall record any departure from the standards requirement in our cost auditing standards. जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूं कि what does the SA 230 in CA Institute says कि you have 60 days to assemble your documents. How many days? 60 days. 60 days का मतलब समझ रहे हो? The day when you sign the audit report, अगले 60 days में आपकी फाइल रेडी हो जानी चाहिए। You should not keep the documents lying on the table. Assemble it within how many days? 60 days. But if I am taking 90 days to assemble it, can you please tell me the day of departures? 30 days. How many days extra? It means, do I know my standard or does not know? Does not know. That shows your material departure from the generally accepted auditing practices. Did you get the point? So always make the documentation of everything. Not even a single thing to be left unturned. In documenting the nature, timing and extent of, what is this word? अच्छा, RAPS and FAPS की फुल फॉर्म पता ना? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, सब कुछ नोट डाउन करके रखना है। द ऑडिटर शेल रिकॉर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स एंड मेथड टेस्टेड, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग, रिव्यूइंग सच प्रोसीजर विद रेलेवेंट डेट्स एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट रिव्यू। अभी मैंने आपको एफडी का एग्जांपल बताया। कैन यू प्लीज टेल मी regarding the FD what you will write? Suppose you are making documentation of your FD. What did you ask? आप लिखोगे I asked FDR. What did I ask? They provided WR. Who provided? MD. ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फ्यूचर में अगर वो बंदा आपके 2-3 साल के बाद आया कि सर ऐसा ऐसा आपने उस टाइम पे एफडी चेक्स नहीं करे, आज हमारे ऊपर रेड हो गया,
तो मैं बोलूंगा ये देखो आओ, कौन सा डेट बोल रहे, ये डेट, खोला डॉक्यूमेंट, आई आस्क्ड यू एफडीआर, यू गेव मी डब्ल्यूआर, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एमडी, टर्न अराउंड पो, करेक्ट है। तो यही तो होता है सेल्फ डिफेंसिंग टूल, और क्या है, जो बात हुई है सब कुछ रिटर्न में, एवरीथिंग टू बी, किसने दिया, क्या टाइम पे दिया, क्यों दिया, व्हाट वाज द रीजन ही वाज नॉट एबल टू गिव दैट एविडेंस, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हमने कल प्लानिंग स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट बताना, मैंने हमने क्या चार चीजें डॉक्यूमेंट करी थी कल, when we were doing 101, what we documented, what was your planning, what was your strategy, what was the changes in the planning and strategy, what were the reasons of such changes, क्यों डॉक्यूमेंट किया था, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ, देखो आप साल में एक ऑडिट नहीं करते, आप 20 to 30 ऑडिट्स करते हो, यू कांट रिमेंबर नेक्स्ट ईयर व्हाट यू हैव डन लास्ट ईयर, तो इट्स बेटर दैट पुट एवरीथिंग इन व्हाट राइटिंग, इसीलिए आपको टाइम दिया गया 60 डेज, व्हाट इज द टाइम पीरियड, 60 डेज। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, कॉस्ट ऑडिटर shall prepare audit documentation on which basis, timely, this is what I was telling you about how many days, हमारे स्टैंडर्ड में डायरेक्टली टाइम दिया हुआ है, आपके में नहीं दिया हुआ, बट रिमेंबर 60 days इज द करेक्ट टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ऑडिट। नेक्स्ट पॉइंट, if in exceptional circumstances cost auditor performs any new or additional audit procedures or draws new conclusions after the date of audit report, then he shall document such circumstance and details of such procedures performed। अब सुनना ध्यान से, आपने 7 सितंबर 2023 को आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दिया, आपने पूरा साइन करके दे दिया, आपको एक इवेंट पता चला, यू केम टू नो अबाउट एन इवेंट ऑन 15 सितंबर 2023, व्हेन, बिफोर साइनिंग और आफ्टर साइनिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सबसीक्वेंट इवेंट, व्हाट डू वी कॉल इट एज, लेट्स से फॉर एग्जांपल this event happened in May, but client is telling you on what, September, तो it is whose fault, client's fault। May का event आपको साइनिंग से पहले पता होना चाहिए था, but it had you known it earlier, whether your opinion could have changed, तो is it affecting your opinion now, yes, तो आपने क्या बोला client को, I would like to cancel this report, I would like to do FAPS, further audit procedure, and now instead of unmodified report I would like to give you modified, मेरी ओपिनियन हो गई चेंज। अब ये बताओ, इज इट अ ह्यूज इवेंट, आपने एक रिपोर्ट इशू किया, उसके बाद आपको इवेंट पता चला, उसके बाद यू डिड सम प्रोसीजर, यू कलेक्टेड न्यू एविडेंसेस एंड योर ओपिनियन गॉट व्हाट चेंज, इज इट समथिंग यू वुड लाइक टू नोट डाउन, यस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सेम थिंग में हैपन अगेन, तो वुड यू लाइक टू गो नेक्स्ट ईयर विद अ प्रिपेयर्ड मैनर और अनप्रिपेयर्ड मैनर। Read the last point again. If in the exceptional circumstances cost auditor performs any new or additional audit procedure or draws new conclusion after the date of cost audit report, then he shall document such circumstance and the details of such procedures performed। तो कभी भी याद रख लो, ये events बहुत important होते हैं, you should always make the records in writing। Cost auditor shall assemble the audit documentation in a which file, audit file। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ऑडिट फाइल्स के अंदर अपने को क्या क्या आएगा, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल कम इन ऑडिट फाइल, रीड द पॉइंट नंबर 1, चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा मेरे को ये बताओ, व्हाट यू वुड लाइक टू चेक इन अ नॉर्मल क्लाइंट्स कंपनी, आप क्या क्या चेक करोगे, मान लो आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, सेल्स, परचेज, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, एसेट्स, लायबिलिटी, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट प्रिंसिपल। तो वुड यू लाइक टू प्रिपेयर चेकलिस्ट, the same thing I told you about the DMart, if you are checking limited items no need to prepare a checklist, but if you are checking so many items prepare a what of it, checklist। Next one, cost accounting standards as prescribed by the institute, and next one is what, GACAPs, what is GACAPs, cost accounting principle। Next one, your what, audit programs, your what, analysis and your audit query list, ये सब आपकी कौन सी फाइल के अंदर होगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल। टेल मी द 6 पॉइंट्स, चेकलिस्ट, अंडर द चेकलिस्ट ऑफ व्हाट, योर वेरिफिकेशन स्टेप्स, योर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, योर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द GACPs, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, योर ऑडिट प्रोग्राम्स, एंड पॉइंट नंबर 3, एनालिसिस, पॉइंट नंबर 4, ऑडिट क्वेरी लिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मान लो वाइजैक स्टील प्लांट को एक 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब बताओ इज इट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू वुड लाइक टू
take the copy of that agreement paper and you would like, क्योंकि that is nothing but called which contract? Significant contract relating to cost and revenue. Next one, letters of confirmation. Just now I told you, you had a oral communication. Would you like to put it in writing? Would you like to take confirmation on the same? And you will tell them to sign it. That is called letter of what? Confirmation. Like stock of material with what? Subcontractor. Suppose आपका आधा stock आपके subcontractor के पास पड़ा है. तो एम आई एबल टू वेरीफाई और अनेबल टू क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर का गोडाउन से फॉर एग्जांपल वाइजैक में है, मैं हैदराबाद में बैठा हूं, अब मैं आई कांट गो ओवर देयर बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू डू, तो आई विल टेक द लेटर ऑफ कंफर्मेशन. इसे हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर्स बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट एज? एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर्स. नेक्स्ट वन, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम मैनेजमेंट. अभी मैंने तुम्हें बताया एमआरएल. व्हाट इज एमआरएल? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स. नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट्स और कॉपीज ऑफ व्हाट? एंटिटीज रिकॉर्ड. मतलब उनके सीआरए रिकॉर्ड्स का कॉपी लेना, परचेज का कॉपी लेना, सम सेल्स इनवॉइसेस का कॉपी लेना, ऑल दीज थिंग्स विल बिकम द पार्ट ऑफ योर व्हाट? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल. तो इन टोटल प्लीज टेल मी 5 to 6 थिंग्स विच विल बी द पार्ट ऑफ योर फाइल. बेस्ट तरीका बताओ, अगर आपको ये भूल रहा है ना तो अपना तरीका पेट सी, प्रोसीजर्स, एविडेंसेस, टेक्निक्स, कंक्लूजन. उसके अलावा 4-5 पॉइंट्स और लिख देना. क्या? चेकलिस्ट. चेकलिस्ट के अंदर व्हाट कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आई फॉलोड, व्हाट GACAPs आई फॉलोड, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स, राइट और क्या क्या क्या, ऑडिट क्वेरी लिस्ट, माय एनालिसिस एंड एविडेंसेस कलेक्टेड. तो कुछ में मतलब एवरीथिंग व्हाट यू डू is going to the part of your documentation list. What is the next point? Audit documentation may be in the form of paper form, and where it is in the form of electronic form, special care may be required to protect against what? Accidental deletion or tampering. What do you mean by that? हाँ, what do you mean by that? अच्छा अच्छा, कैसे losing? नहीं 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 सर, आपको तो पता है, मैं तो उनको पूछ रहा हूँ. हाउ? अरे यार कई बार गलती से अपने को डिलीट हो जाता है ना, तो मतलब आप मेक श्योर करो कि पूरा डॉक्यूमेंट लेने के बाद सेव इट इन अ प्रॉपर फोल्डर एंड लॉक दैट फोल्डर विद अ पासवर्ड सो दैट टेम्परिंग शुड नॉट हैपन. व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परिंग? एनी काइंड ऑफ unauthorized changes. Which changes? Unauthorized. Content and form of audit documentation will depend upon the number of factors. अब मैं तुमसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा. Give me the answer. Size of the entity is so huge. What will be the quantum of your audit evidence? Will be more or will be less? Size of the entity is less. What will be the quantum? Less. Nature of the business is simple and nature of the business is complex. Where your audit documentation will be more complex. तो पहला फैक्टर पढ़ो, size, complexity of operations of audit. Second one, तो where your manual documentation will be more, where the less use of IT or more use of IT? Less use of IT. और अगर क्लाइंट का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटेड है तो less, more use of IT brings the less amount of documentation because your more of the documentation will be in the paper form or electronic form? Electronic form. Next point, ये वाला बताओ, Romum is high, documentation question mark. Romum is high, what will be your documentation? Question mark. Higher. Romum is less. Next one, cost audit methodology and tools used. For example, whether automated queries were used to get the audit evidence from the cost records. मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल पूछता हूँ, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंस्पेक्शन में हु इज इन्वॉल्व? क्या हो गया? लॉक. सडनली क्या हो गया? अच्छा, जस्ट लाइक दैट, बाहर से लॉक कर दिया क्या? ये ऐसा क्यों? हम लोग जेल में थोड़ा, तो डोंट दे नो दैट वी कैन गो आउट फ्रॉम दैट विंडो एज वेल? लिटिल बिट कॉमन सेंस इज लिटिल बिट अनकॉमन. नो इश्यूज. अच्छा मेरे को ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एविडेंस कलेक्शन बाय इंस्पेक्शन एंड ऑडिट एविडेंस कलेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन? दोनों में डिफरेंस बताओ. इंस्पेक्शन में हु इज इन्वॉल्व? ऑडिटर. ऑब्जर्वेशन में ऑडिटर इज इन्वॉल्व, बट इज ही इन्वॉल्व इन डूइंग काउंटिंग और ऑब्जर्विंग द मेथड ऑफ काउंटिंग?
where your audit evidence will be more, inspection or observation? Inspection, क्योंकि you are doing it. Observation में you will simply take a letter कि I am okay with your method of counting, please confirm the same. And what is the last one? Nature of audit procedures performed. चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. रैप्स एंड फैप्स में डिफरेंस क्या था? चलो, रोमम वॉज हाई. When the Roman was high, you will follow strict procedures or lenient one? Strict. तो your audit evidence collection will be higher. तो क्या लिखा हुआ है ये देखो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म. तो ये फैक्टर्स होते हैं जिससे ऑडिटर डिसाइड करता है कि व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ माय ऑडिट एविडेंस. तो नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी, extent of computerization, ROMM assessed, methodology, and the nature of which procedures? Audit procedures. In particular, it is necessary to document the basis for conclusion not readily determinable from other documentation. What does that mean? Please tell me. What do you understand by SAAE? चलो मान लो आपका एविडेंस नहीं मिला. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू डिडंट गेट द एविडेंस. विल यू बी एबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन? तो आप क्या करोगे? ऑडिट छोड़ के चले आओगे. कौन सी ओपिनियन दोगे? पहले तो मेरे को ये बताओ, चार ओपिनियन. यस, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ ओपिनियन? क्लीन, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर. आपको सारे एविडेंस मिले, एवरीथिंग इज सुपर्ब, एवरीथिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज 100% जेन्युइन, यू विल गिव अ विच ओपिनियन? क्लीन. आपको सारे एविडेंस मिले बट सम माइनर अनएथिकल लैप्सेस एंड इरेगुलरिटीज विच आर अवॉइडेबल, आप दोगे क्वालिफाइड. Everything is completely full of frauds and error, adverse. And when you are unable to get the evidence on that, the disclaimer. तो हमेशा याद रखना है चार तरह की ओपिनियन होती है, क्लीन, क्वालिफाइड, एडवर्स. ये अपने को टॉपिक है XBRL फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, उसके अंदर अपन, मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन रिपोर्ट. एक चार्ट बनवाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन एंड क्वालिफाइड. ठीक है. Now let me see what else they are saying, because we are reached on that part which is the extension of the above part. Audit documentation must be sufficient and appropriate. We know that. Audit documentation must contain conformance. We know that. Typical of such evidence are adequately documented plan, such appointment letters, minutes. ये भी पता है अपने को. Matters that give rise. अच्छा मेरे को ये बताओ, what about those matters which give rise to the significant risks? ये पैराग्राफ पढ़ियो भाई, 6.7. चश्मे हैं फिर पढ़. हाँ तेरे को ही बोला. हेलो 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 क्या? अबे तुम्हारा रीडिंग कंपटीशन नहीं होता था क्या स्कूल में? होता था ना, तो सब में फेल ही होता होगा तू तो. हाँ, पढ़ अभी अच्छे से पढ़. हाँ. Just now I told you कि you came across an event later on after signing the which report? Would you like to keep your mouth shut or you would like to do further faps? अगर आपकी ओपिनियन चेंज होती है तो would you like to change it? And if you changed it, would you do anything like documentation in that case? Yes, क्योंकि next year you will be more alert, so that next year before starting the next year audit you would be alert कि company hides something from you which comes to you to your knowledge after the audit is done. तो you will be more stricter next time or less stricter next time? वो मैटर चल रहा है. पढ़ो तो समझ में आए. नेक्स्ट पढ़. हम्म. पढ़ लिया ना? मीनिंग बता. हाँ. ओके. तो फिर ऊपर के पैराग्राफ में क्या लिखा था?
अरे भाई जब मैं समझा रहा होता हूँ तो समझ लिया करो, ये लैंग्वेज ऐसी है कि विच यू विल रीड ऑन योर ओन. Sometimes you may not be able to differentiate कि what he is trying to tell in the previous para and what he is trying to tell in the next para. They are saying that कि sometimes the things are so significant that कि they are not just only required to be collected, they are required to be understood as well. जब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने एक नेगेटिव रिपोर्ट दी, ठीक है, तुमने उसके रीजंस भी दे दिए. वन ऑफ द शेयर होल्डर हु इज सिटिंग इन द एजीएम, यू नो एजीएम, do we read out the audit report in the AGM? Yes. So AGM में one of the shareholders stood up and he said that Rohit, why you have given this negative report? And I didn't understand your reason. So who will be the best person to make him understand? Auditor or the management? Auditor. So उस time पे you will be the one who has to make that shareholder's query to be resolved. Are you getting the point? So do not only collect the evidence. Understand why you are collecting it. तो सिर्फ अपने को डॉक्यूमेंटेशन भरना नहीं है. वी डोंट, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, अरे मेरी फाइल मोटी है, आई एम अ बेटर. ऐसा नहीं होता. क्वांटिटी इज ऑलवेज इंफीरियर देन क्वालिटी, हमेशा याद रखना. चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके पास बेस्ट क्वालिटी ऑडिट एविडेंस है, आपके पास चाहे कम क्वांटिटी है ना, इट्स ओके बिकॉज द क्वालिटी इज बेस्ट. But suppose you have the worst quality audit evidence. Even if you will increase the quantity, does that matter or does not matter? So what is more superior than what? Quality is always more superior than. आपके number of evidence will not decide whether you are good auditor or not. What you collected and why you collected and what was the reason behind it, that will decide whether you are a good auditor or not. So it's not the quantity game, it's a which game? Quality game. You have to understand. That is what is being told in this paragraph. अर्थమైंदा? हाँ. And some words. क्योंकि when you are in Hyderabad, when you are in Rome, you have to be Roman. So when you are in Hyderabad, little bit koncham Telugu, you have to speak, right? Okay, next one. Records of discussion include अच्छा मेरे को ये बताओ minutes क्या होते हैं? ये तो पता होगा आपको. Please tell me minutes. Why do you want to collect the minutes? Because auditor enters the client's place when? During the year or after the completion of the year? So the only thing available with you is obtaining the minutes of the meeting only. If you want to know what has happened in that meeting, minutes is nothing but called the proceedings of what? Meetings. What has been discussed in the meeting, that record in a short manner, that is nothing but called what? Minute. तो आपके पास only and only audit evidence कि what has happened in that meeting is to obtain what? Minutes. अब मेरे को ये बताओ कि कंपनी क्या बोल रही है कि सर हमारे पास minutes नहीं है. अब आप क्या करोगे? You wanted to know what has happened in the meeting. You requested the company, please give me your minutes so that I can see what decisions have been taken in the meeting. Company is saying, sir, we do not follow 118 and 119. हमने minutes आज तक कभी prepare ही नहीं करे. अब बताओ, अब क्या करोगे? Sufficient and appropriate audit evidence available or not available? So would you like to give adverse opinion or disclaimer? Disclaimer. So you don't have to give a second thought while giving an opinion. You don't have to think about the auditee. You have to think about the users of इस cost statement. ठीक है ना? आपको शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना है, नॉट अबाउट द कंपनी. कंपनी के बारे में सोचने के लिए एक बंदा है, उसे हम लोग इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं. विच ऑडिटर? ही इज अ पपेट ऑफ द मैनेजमेंट. ही विल थिंक फॉर द कंपनी, बाय द कंपनी एंड ऑफ द कंपनी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट वी आर एक्सटर्नल ऑडिटर्स. वी आर नॉट ऑफ द कंपनी. वी आर फॉर users. This is what. And next one, audit documentation in respect of which entities? May be less than what is indicated, but may include the minimum the following. तो मतलब even if you are doing the small entity audits, these are the minimum things you have to add. What is the first one? ये आपको पता ही होगा, AKOCB. What is AKOCB? Acquiring the knowledge. जो आपने एक्वायर किया अपने डॉक्यूमेंटेशन में डाल दो, जैसे उसका MOA, उसका AOA, उसका सर्टिफिकेट ऑफ incorporation. Organization chart showing the what? Responsibility centers. Next one, description preferably a flow chart of manufacturing process. Do you remember yesterday I told you P2P operation? Purchase to payment. So please make sure that you put a flow chart of at least their manufacturing process. Internal controls over the material cost, labor cost, and so these are the minimum required documentations you have to maintain even if you are doing the audit of a which entity? Smaller entity. Test of what? Materiality, ROMUM what you identified, and overall audit strategy and
plan. तो obviously अगर larger entity होगी तो the list will be more bigger. And what is the last point? Significant matters noted during the audit and conclusions reached. If in the exceptional cases, nights, same point again. मैंने बोला ना बार बार वही repeat करते हैं. If in the exceptional cases you need to obtain FAPs again and you need to give a new audit report, would you like to document the same? Yes. So it is necessary for cost auditor. Names of the team member preparing the specific audit documentation. Preparing the audit documentation on which basis? Timely basis. What is the time? 60 days. But what is your preservation time? 10 years. How many years? 10 years. Facts which became known to the auditor after the date of audit report, but which, if it known earlier, would have caused the cost statement to be changed or cost audit report to be modified, should be added to the cost audit documentation. Just now I told you, cost audit documentation must be assembled as the audit goes on, and the final assembly required of documentation must be limited. Assembling the final audit file should be completed within a reasonable time after the completion of audit, and that is nothing but how many days? 60 days. After assembling a final audit file, auditor should not delete or discard for any nature before the end of its which period? Retention. और आपका retention period कितना है भाई? 10 years. It is, अच्छा हाँ, सबसे important question तो पूछना भूल ही गया मैं. ये किसकी property होती है? Documentation. Who collected it? But from whom? तो क्लाइंट तुम्हें बोल रहा भैया पेपर भी मेरा, जेरोक्स भी मेरा, लेबर भी मेरा. You just collected it. पेपर यू टुक फ्रॉम द क्लाइंट्स ऑफिस. जेरोक्स मशीन किसकी यूज करी? क्लाइंट की. जेरोक्स किसने करके दिया? क्लाइंट ने. इंक किसकी यूज हुई? क्लाइंट के. तो तुम कैसे बोल रहे हो तुम्हारी प्रॉपर्टी है? कलेक्ट किसने किया? ऑडिटर ने. रिटेन कौन करेगा? ऑडिटर. कॉन्फिडेंशियलिटी कौन मेंटेन करेगा? ऑडिटर. सेफ कस्टडी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर. 10 साल तक ये कचरे को अपने ऑफिस में किसको रखना है? ऑडिटर. तो दैट इज द रीजन इट इज हुज प्रॉपर्टी? ऑडिटर्स प्रॉपर्टी. डिड यू गेट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो आएंगे ध्यान से आंसर सुनना. यू आर अ कॉस्ट ऑडिटर एंड आई एम अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. आई वाज डूइंग माय स्टैट्यूटरी ऑडिट, and while doing my statutory audit I needed some information which you have collected as a which auditor? Cost auditor. मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा सर I would like to visit your office and would like to access your working papers. You simply hung up the phone and said no to me. Can you or you can't? आंसर देना डायरेक्टली. कैन यू और यू कांट? यू कैन. SA 102 आपको CAS 102 आपको अथॉरिटी देता है टू से नो टू एनी अदर प्रोफेशनल ऑडिटर, टू से नो टू द क्लाइंट ऑल्सो, बट नॉट टू से नो इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. If the same documents income tax department is asking, now can you say no? No, क्योंकि now it is a question of another professional or question of law. तो कभी याद रखना, you have every right to say no to anyone except if there is a question of law, like a confidentiality. तो आपका सपोज 4 years के बाद क्लाइंट आया तुम्हारे पास. Now he is saying, रोहित सर 4 years back you did my audit. I lost my books because fire broke out in my office and I ruined my books of account. I want to come to your office to take some extracts. And you offered him a coffee and tea. After that, when he wanted to see, you said no. Can you or you can't? You can. आप क्लाइंट को भी नो बोल सकते हो, आप प्रोफेशनल को भी नो बोल सकते हो. द ओनली वन सिचुएशन वेर यू कांट से नो, क्वेश्चन ऑफ लॉ. उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस, इसे बोलते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट. रीड द 6.17. Audit documentation is a property of cost unless otherwise specified by law or regulation. He may at his discretion. What do you mean by discretion? ये मेरी right है, may portion or extracts from the audit documentation available to. ये मेरी right है, मैं उसे show करूं या ना करूं. But only I have to show when there's a question of law. And the next point, the cost audit documentation should be retained for at least 10 years from the date of cost audit report. What is the effective date of this standard? 11 September 2015. So that brings an end to your another standard called 102 audit documentation. पुराने स्टैंडर्ड का कहां तक लिखा हमने, वो कंप्लीट करेंगे, इसको कल लिखेंगे. जस्ट टेल मी सर, डॉक्यूमेंटेशन समझ में आया 100%? ईच एंड एवरीथिंग यू अंडरस्टूड? सो पुराने स्टैंडर्ड का प्लीज टेल मी अप टू व्हाट वी हैव रिटन. रिस्क असेसमेंट, डेफिनेशंस में अप टू
Initial audit we wrote a misstatement. Up to misstatement we have written. Risk assessment. Okay. Okay. Put the heading. Just put the heading requirements. जल्दी जल्दी लिखेंगे 10 मिनट में. And we'll wind up this standard. Requirements. Before planning an audit. Before planning an audit. Before planning an audit, comma. Before planning an audit, comma. There are following preliminary engagement activities. Before planning an audit, comma, there are following preliminary engagement activities. There are following preliminary engagement activities to be followed. There are following preliminary engagement activities to be followed. Point number 1. Obtain letter of appointment. Obtain letter of appointment. And ensure appointment has legally happened. Obtain letter of appointment and ensure appointment has legally happened. Can you please tell me what do you mean by appointment has legally happened? आपको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड विद इन 180 days. That is called law. Legally happened. After appointment you should get a one formal which letter? Appointment letter. उसके बाद आपका planning phase start होगा. Now read the heading what I made you write. Before planning starts, following things are required to be followed. Point number 1, obtain the appointment letter and ensure appointment has legally happened. Second, ethical requirements of ICAI. Ethical requirements of ICAI. इसके ब्रैकेट में लिख लो रेफर चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स. याद है 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर. एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ICAI ब्रैकेट में प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर. ठीक है. नेक्स्ट वन. There shall always be participative approach. What do you mean by participative approach? You should make the plan and tell to your team, or you should allow your team to participate. Allow the team to participate. There should always be participative approach. Participative approach while planning the audit. While planning the audit and strategizing the audit. There shall be participative approach while planning the audit and strategizing the audit. Next point. Following factors to be considered. Following factors to be considered. Following factors to be considered while making audit strategy. Following factors to be considered while making audit strategy. Under the requirements only. It is all going under the requirements. First we completed definitions, na? Before that we completed scope. Before that we completed objective. The objective, scope, definitions, requirements. Now what is the heading I made you write? Following are the factors to be considered before making. Point number 1. Point number 1. Results of preliminary activities. Results of preliminary activities. Point number 2. Knowledge from previous audits. Knowledge from previous audits. Point number 3. Knowledge of client's business.
knowledge of client's business, statutory deadlines, statutory deadlines, nature, timing, and extent of resources available, nature, timing, and extent of resources available, DRS on the team. What is DRS? Direction, review, supervision. DRS on the team. कितने पॉइंट्स हो गए? 6 ना? Make it 7. Last point. Nature and scope of audit. DRS of the team. Over the team, sorry. DRS over the team. Nature and scope of audit. Nature and scope of audit. Yes. Next one. Once the audit is completed, next heading, once the audit is completed, tell me what are the 4 things we need to document? ये standard में. Once the audit is over, what are the 4 things we need to document? Our planning, our strategy, changes, and reasons of changes. Right? Once the audit is completed, comma, auditor shall document the following. Once the audit is completed, comma, auditor shall document the following. Shall document the following. First thing, audit planning, audit strategy, audit planning, audit strategy. Third, changes in plan and strategy, changes in plan and strategy. And fourth, reasons of such changes. Reasons of such changes. Is it mandatory to communicate with the auditor of previous year audit? Why? So that you can understand and consider the objections raised by the previous auditor. Okay, why you should adopt or why you should say no. So right, next point. It is mandatory that it is mandatory that incoming auditor, it is mandatory that incoming cost auditor must communicate in writing, with outgoing cost auditor, or previous auditor to consider his issues and objections. अच्छा मेरे को ये बताओ, planning is a rigid thing or flexible thing? Is it one time or continuous? Do you keep on changing your plannings or not? And that's why it should be rigid or flexible? Flexible. Right, next point. Both planning and strategy. Both planning and strategy should be continuous. Both planning and strategies should be continuous and flexible in nature. Flexible in nature. Matters that are relevant. Okay.
put the next heading. Acquiring the knowledge of client's business means acquiring the knowledge of client's business means on the left side, right? External factor. Internal factors. On the right side, external factors. अरे एक ही बात है भाई, भावनाओं को समझो, दो जगह लिखना है, इंटरनल एक्सटर्नल। क्या यार, इतना स्पेसिफिक हो जाते हो तुम। हाँ,